they will not be allowed to travel far and wide if associated with the PFI. Let me now go across to Arunima, my colleague, who's been tracking this story. Now, one of the things that you've heard from political parties as well as other experts and analysts is that a ban doesn't materially amount to anything on the ground, because today you've banned PFI, they can metamorphosize into something else, just like you did Simi a few years ago. Simi went on to become PFI. So how does the Home Ministry explain how they intend to counter that? Well, this is not a version that they are supporting at all. In fact, senior police officials in states also who are dealing with PFI in their role of anti-terrorism unit, they also are saying this ban, coupled with the All India action, the All India crackdown that has happened in the last 2 weeks, that has given them a huge leg up as far as their fight. Thanks a lot for staying with us. A quick check of the day's biggest stories. Retired Lieutenant General Anil Chauhan has been named as India's Chief of Defence Staff. The post was lying vacant for over 9 months after the country's first CDS, General Bipin Rawat, was killed in a chopper crash last December. The appointment comes almost 4 months after government amended the Army, Air Force and Navy rules in early June. To broaden the pool for the selection of the CDS, it made retired 3-star officers among those eligible for the top post. In the midst of Rajasthan political turmoil, Chief Minister Ashok Gehlot will land in Delhi to meet Sonia Gandhi this evening. So far, no action has been recommended against him, while show-cause notices were issued to 3 Gehlot camp MLAs, Shanti Dharewal, Mahesh Joshi and Dharmendra Rathore, for holding parallel meetings. Meanwhile, senior leader Digvijay Singh has entered the Congress president's race and is all set to file his nomination papers. CBI has got 5 days custody of Vijay Nair, a close associate of Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, in connection with the excise policy scam. This is the first such arrest made in the case. Nair is one of the 15 named in the CBI's FIR. He is said to have been actively involved in irregularities in the framing and implementation of the excise policy in Delhi for the year 21-22. Apart from this, liquor businessman Sameer Mahendru has been arrested by the ED. उसको गिरफ्तार कर लिया कि वो शराब, दिल्ली के कोई शराब घोटाले में शामिल है। उसका दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? वो पिछले 4-5 दिन से उसको बुला भी रहे थे और कह रहे थे ज़बरदस्ती मनीष सिसोदिया जी का नाम लो, मनीष सिसोदिया जी का नाम लो। अब मनीष सिसोदिया जी के घर इन्होंने रेड कर ली, उसमें कुछ नहीं मिला। विजय नायर की गिरफ्तारी ये बिल्कुल दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, जो स्टिंग बता रहे थे और जो जांच बता रही है कि दिल्ली की शराब नीति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan was granted bail today in connection with a case of alleged irregularities at Delhi Waqf Board that is being probed by the anti-corruption branch. Just 2 days back, he was sent to 14-day judicial custody. He's charged with making arbitrary and illegal recruitments, misappropriation of funds, and renting out properties belonging to the board. Centre today extended its program to provide free ration to poor by 3 months. This scheme provides 5 kilograms of wheat and rice free of cost to 800 million households every month and will now run till December 31. The decision was taken in the Union Cabinet headed by Prime Minister Narendra Modi. A day after BCCI replaced Mohammad Shami in the T20 international squad for the South Africa series, the pacer has shared his negative COVID report on Instagram. He shared a picture of the report that does not have a date but has negative written over it. Turkish singer Melek Mosso cut her hair on stage during a show in solidarity with thousands of Iranian women who are demanding justice for the death of Mahsa Amini. Malik Mosso's act of protest was met with cheers. The video went viral after Iranian journalists Omid Memarian and Sima Sabit shared the clip. This is part of the anti-hijab protests that have been triggered in Iran post the death of Amini, who was allegedly beaten in custody by the country's morality police. Argentinian women have come out on the streets in solidarity with Iran's hijab protesters. The feminist movement in Buenos Aires has joined the international outcry for Mahsa Amini, the Iranian Kurdish woman who died in custody
after being detained by the morality police. The group carried out the demonstration in front of Iran's embassy. Demonstrators showed banners depicting the Iranian government as a religious dictatorship and crying for justice after the woman's death. Hurricane Ian has intensified into an extremely dangerous Category 4 storm as it approached Florida in the US. Forecasters have predicted it would retain top winds of 220 kilometers per hour until landfall. The hurricane is expected to cause life-threatening storm surge, catastrophic winds and flooding in the Florida peninsula. Another powerful storm has hit central Vietnam earlier today. Storm Noru has blown off roofs, billboards, uprooted trees and has caused a widespread blackout affecting over 1 million households. There have not been any immediate reports of casualties, but authorities said it would bring more rain and could still pose further danger. According to state media, the typhoon has downgraded to a tropical depression now after making landfall. And finally, before I take your leave in Seen Unseen today, we leave you with women Indian Air Force pilots flying the indigenously developed ALH Dhruv Mark III helicopters over Arunachal Pradesh and Assam. Thanks a lot for watching. Namaste and Jai Hind, ladies and gentlemen. I am joining you from Jammu, the very, very special effort that we put together, and we would show that to you later this evening. For long, I have wanted to come to Jammu and speak to the people here when we talk about Jammu and Kashmir. Jammu largely goes unrepresented, but we'll talk about that and we'll showcase all of that later tonight on The Right Stand. But right now, the focus is by banning PFI and its affiliate organizations, fronts, etc., has the government of India taken the right stand? That was what we will try and look at while we speak to various voices. Joining us on the show tonight in a short while from now will be the National Secretary of the BJP, Shri Sunil Devdhar, followed by the Home Minister of Madhya Pradesh, who we hope we can get through, Narottam Mishra ji. And then we will have Dr. Tara Karta and Abhijit Iyer Mitra talking to us on what they believe the government has done, should have done, etc., and whether or not they've taken the right stand. So let's begin with what happened right at daybreak this morning, this Wednesday, where the PFI order came through by the government, where under sections 3 and 4 of the UAPA, Unlawful Activities Prevention Act, the PFI, its affiliates, its fronts were all declared unlawful organizations. This is what the order said, quote unquote. The central government today hereby declares the Popular Front of India and its associates or affiliates of fronts including Rehab India Foundation, Campus Front of India, All India Imams Council AIIC, Rights Organization NCHRO, National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation Kerala as an unlawful association. That's what they have said. This is the MHA order, that the PFI and its affiliates, its fronts, etc. have been banned under Section 3 and 4 of the UAPA. Unlawful association is the point. Now, let me just quickly take you through what else has been said in this as far as the order and the reasons for the order. What are the reasons why the MHA has said we need to ban? PFI's sole objective is to expand its membership, pursuing secret agenda to radicalize society, disrespectful towards the constitutional setup. PFI has potential of disturbing communal harmony. Instances of PFI leaders linked with ISIS. PFI promoting sense of insecurity in the country. Governments of UP, Karnataka, Gujarat have recommended a ban on the PFI. This is what the order says, and it's justified and put out very clearly delineated
reasons why the PFI, its front and its affiliates have been banned. And this ban and this notification came hours after a post-midnight PFI statement from its PR team, which actually had a 9-point counter. If we put out 9 different exclusives on grounds here at CNN News 18, it was a 9-point counter where largely the PFI claimed that it was a Hindutva fascist regime that has come out and is out on a witch hunt against the PFI. Let's take this aspect and whether or not the government of India has taken the right stand with Sri Sunil Devdhar, who's joining us now live at this point. Sunil ji, namaste. You are the National Secretary of the BJP and you have actually tweeted, you've congratulated the Prime Minister and the Home Minister for taking this action where you believe, you said, that organizations that want to alternate the DNA of Bharat. Let's start there. Your thoughts on this crackdown and ban? This was an excellent action taken by NIA, and the secrecy which was maintained and the way across the country it took place at the same time, and hundreds of people are arrested, terrorists or the people those who were involved in terrorist activities or those who were planning for some big terrorist events in this country to disturb the very DNA of our country. It was timely stopped, I can say, and that is why I have thanked Narendra Modi ji and Amit Shah ji for this timely action taken by them. But Sunil ji, just about midnight, the PFI put out a statement where they said it's a Hindutva fascist regime with ED and NIA servile to this regime. And they've also used the term where they have said that courts are puppets at the hands of the government. They have said that this is a witch hunt by the Sangh Parivar. How would you respond? See, it is an obvious response from their side because they understand what they are. They planned for the events which they planned for future to destroy this country, and they know that the real protectors of this country are the Hindutva forces, and they know this government because the previous governments were biryani khilao governments to these people. And number one, the biryani was stopped, and number two, the real medicine has been given by Narendra Modi ji and Amit Shah ji that this type of things will not be tolerated in this country. You can see that after Narendra Modi ji took over this country as a Pradhan Sevak, I can call, 8 years plus some months have passed. There is no single terrorist attack happened in our country excluding Jammu and Kashmir. But what it was what was happening previous to this was the bomb blast in Mumbai, Bangalore, and number of places in this country, serial blast. Now everything has been stopped. Nobody is discussing today about Nota Bandi, but definitely one thing which is being done because of Nota Bandi, or which is the outcome of Nota Bandi, is the terrorist funding. This total funding was in black money and cash money, which was totally destroyed because of Nota Bandi. And so these people, PFI, SDPI people, they know that if anybody is there to support them, they are the only leftist lobby or Tukde gang or Congress or some family enterprise parties in this country, those who are totally indulged in corruption, and maybe some parties like Arvind Kejriwal, those who are Naxal parties. I can definitely call them Naxal parties because their ideology, their deeds, their decisions and their comments and their way of conducting are definitely, they are urban Naxals. And that is why they will support this PFI, SDPI. And the true nationalist of this country, that is Bharatiya Janata Party, and obviously Rashtriya Swayamsevak Sangha and Swayamsevaks organizations, they understand that PFI, SDPI, they understand that these are the people
those who are not going to tolerate any attack on sovereignty of our country and our Bharat Mata. Well, you talked about those who will perhaps give cover fire to organizations like the PFI, but there are also Congress leaders in Kerala. One of them has come out and said very openly that the RSS should also be banned. There is no comparison of RSS with all these organizations. There is no comparison. मतलब इसके बारे में ऐसा बोलना ही पाप है. And forget about Congress, Anand ji. That person whoever has spoken this, he should go and go to history and read. He should see that Pandit Nehru initially banned RSS, and it was Pandit Jawaharlal Nehru's decision that Rashtriya Swayamsevak Sangha was invited for Patha Sanchalan on 26 January. So he should correct himself, being a congressman. Secondly, after when Indira Gandhi second time banned RSS, and when she feared and what she experienced after that ban, and she realized that I was totally wrong what I did, and after she came back to power, she never uttered a single word about RSS. A single word about RSS after the ban was lifted and Janta government collapsed and Indira Gandhi again came to power. If you can check all the audios or visuals or the statements of late Rajiv Gandhi ji, then you will not find a single comment on RSS, barring once I remember he said that बाहर जो मोर्चा के लिए आए उनकी खाकी हाफ पैंट्स आप जला कर आओ. एक comment सिर्फ उनकी थी. Otherwise, even Rajiv Gandhi never uttered a single word about RSS because they understood that RSS is different. RSS is a truly nationalist party. And what about social service RSS is giving for this country? Crores of people are being benefited because of these social service organizations of Rashtriya Swayamsevak Sangha, Swayamsevaks. Whenever there is a natural calamity, everyone has appreciated that before government machinery reach, before even army reach to help out people, Rashtriya Swayamsevak Sangha, Swayamsevaks reach. But Srinagar airport was cleared as Sangha Swayamsevaks in 1998 when jihadis attacked Jammu Kashmir to capture it, and Indian army could land on Jammu Kashmir on Srinagar airport only because RSS Swayamsevaks risking their life, they cleared the snow which was lying on the airstrip of Srinagar, and thousands of examples can be given. So Anandji, there is no comparison between RSS and any other such fraud organization. But the PFI says they have modeled themselves on the RSS. What RSS is for Hindus and Hindutva, PFI is doing the same for Muslims because RSS doesn't care for Muslims. That's what the PFI thinks. Basically, PFI knows what actually RSS is doing, but they want to mislead people by their statements. They know that what RSS is doing, they are not doing. Can they show a single blood bank started by them? Single blood. I am just giving one example. Show me one blood bank they have started. Organized a lot of blood. I can tell you thousands of blood banks initiated by RSS Swayamsevaks in this country. Schools, hospitals, hostels, and number of things. Social service projects. So they don't know what RSS is doing. I will not say this, rather I will correct myself, that they know what RSS is doing. Everyone knows, but it is only a propaganda because they want to save their faces, or they show that RSS that we are also good for Muslims, and that is why they are doing. This is absolutely unfortunate. You are currently active. So Sunilji, you are currently active in Andhra Pradesh. So let me ask you, you've got responsibility there. Was the PFI present there? Is the PFI, SDPI, its offshoots, have you seen them active in Andhra Pradesh? I remember there were riots happened in Atmakur
in Andhra Pradesh. During those riots, thousands of radicals came down on streets, and even they set the police station on fire, and our district president and general secretaries of Bharatiya Janata Party were rescued by local SP in midnight time. And next day in his press conference, he said that we had reports that the training camps of SDPI and PFI were going on in that region. And definitely I can appreciate all the state governments, those who supported this action, apart from their political ideologies, apart from their political line or thinking. You can see the governments are supporting NIA because bottom of their hearts, they understand that this is the threat to our country, our people. And that is why even politics, such type of politics in future is not going to serve any person in this country. Even those who are pure, honest Muslims, I believe that their number is in crores in this country. They are not indulged in such type of activities. So even for them also, even for their protection as well, this action was required. But Sunil ji, is this too little too late or is it timely? नहीं देर नहीं हुई, ऐसा है ना. Discussion was going on, questions were raised. See, anything which on the part of government, it takes time because we have to collect all evidences before such action, and evidences, then the whereabouts of the people, and it should not be leaked. See the secrecy of the. I wonder about the secrecy, and I really appreciate our Home Minister Amit Bhai Shahji and his team, that how secretly the thing might be. It was going on from before a few months, but it was not leaked at all. And suddenly the news came that hundreds of people from different destinations were arrested. They had every single information: who is sleeping in which room, who is traveling in which bogie, who is crossing which border. Everything was there. And at a day, single day, it started. And now the PFI and SDPI are leaderless because all are inside. Well, IB, NIA and of course the NSA, they were all present in the control room. That's what we're given to understand. And this is a process that's taken at least 2 to 3 months of preparation and 2 to 3 weeks of recce. But final question, Sunil ji, let me ask you, will you call it a surgical strike on anti-India forces, internal strike? Yes, definitely. Thank you very much for making the time and speaking with us. Sunil Deodhar, National Secretary of the BJP there. Now we've got Narottam Mishra, Home Minister Madhya Pradesh with us. Narottam Mishra ji, Dr. Narottam Mishra, नमस्ते. आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आनंद नरसिम्हन. मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि PFI के बैन पर आप क्या कहेंगे? मैं स्वागत करता हूं इस निर्णय का कि ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं, PFI जैसे संगठन, जो टेरर फंडिंग जिनको हो रही है, ऐसे संगठन जिनके ISI से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं, ऐसे लोग जिनका केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में हत्याओं में संलिप्तता पाई गई है, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है. और इसलिए मैं माननीय PFI का कहना है कि अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं. बट नरोत्तम मिश्रा जी, PFI का कहना है कि हिंदुत्ववादी, फासीवादी ताकतें और उनके चेले चपाटे हमारे पीछे पड़े हैं. आप क्या कहेंगे? देखो, ओबीसी जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, या आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो हो, मैं कह सकता हूं कि मुझे संघ का स्वयंसेवक होने पर गर्व है, लेकिन PFI पर शर्म है. ये कह सकते हैं ओबीसी जी, दिग्विजय सिंह जी के ये PFI के सदस्य बने या हम हैं या हम समर्थन करते हैं, नहीं कह सकते जी. इसी से समझ में आ जाता है
ये जानबूझ के हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते हैं। अपराधी आतंकवादी हो, पीएफआई का हो, प्रतिबंधित संगठन का हो या जिसका भी हो, अपराधी अपराध होता है और अपराधी की कोई जात नहीं होती। आप इसे एक इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे नरोत्तम मिश्रा जी? आपने कुछ कहा था ऐसा ही। हाँ, मैंने सुबह ही कहा था कि वह सर्जिकल स्ट्राइक उस समय हुई थी जब आतंकवादियों पर अटैक किया था पाकिस्तान की सीमा में जाके। सर्जिकल एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसमें एक साथ देश के कई ठिकानों पर ऐसे लोग जो देश विरोधी कार्य में संलिप्तता पाई गई थी उन पर स्ट्राइक करके उनके संगठन को नेस्त नाबूद किया गया है और प्रतिबंधित किया गया है। अब यहाँ कांग्रेस के नेता कहते हैं नरोत्तम मिश्रा जी, केरल में भी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा है कि अब पीएफआई और उनके ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया तो आरएसएस और उनके साथी संगठनों को भी बैन करिए, दोनों एक ही जैसे हैं। भाई ये कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की है। वो कांग्रेस का नेता कह सकता है कि हमें पीएफआई का सदस्य होने पर गर्व है? नहीं कह सकता। कोई कांग्रेसी कह सकता है? नहीं। हम कह सकते हैं हमें आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। ये अंतर है दोनों में। आरएसएस को कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। एक राष्ट्रभक्तों का संगठन है जिसने देश पर जब भी आपदा आई, विपत्ति आई, तब संघ के स्वयंसेवक सीना खोल के देश भारत माँ की आराधना के लिए अग्रसर रहे। इतना बड़ा अभी कोरोना का काल आया, वैश्विक संकट था। सोनिया गांधी जी से लेकर इनके नीचे के नेता केरल वाले, चाहे मध्य प्रदेश के, कोई अस्पताल में देखे अनाज बांटते दिखे? नहीं। लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक दिखे, ये उनकी क्या होड़ करेंगे? ये कांग्रेस के लोग हैं जो सेना पर सवाल उठाते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ये आंतरिक एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ये वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं, ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, ये न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है। उसी के कारण से अब आधे प्रदेश में कांग्रेस रह गई है, एक प्रदेश भी नहीं बचा अब उनके पास। पर नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश को तो देश का दिल माना जाता है। अब देश के दिल में ही अगर ये घुस के बैठे हैं तो आप क्या कहेंगे? हाल फिलहाल में देखिए मध्य प्रदेश में कितनों की अरेस्ट हुई है। ये सब अपनी जड़ें वहां मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। जेएमबी हो, अंसारुल्लाह बांग्ला हो, आईसिस हो, पीएफआई के हो, सभी कितने तो यहां मध्य प्रदेश में से पकड़े गए। गिरफ्तारी हुई है तो जड़ें जमाई नहीं, जड़ जमाने की कोशिश है और हर कोशिश को हमने नाकाम किया है। चाहे वो चोरी वाले के रूप में हो, चाहे खरगोन दंगे के रूप में हो, चाहे अभी हो, हम इनको जड़ें नहीं जमाने देंगे। हमने मध्य प्रदेश में सिमी का नेटवर्क समाप्त कर दिया। सिमी अब इतिहास की वस्तु हो गई। आज के बाद पीएफआई भी इतिहास की वस्तु होगा। 25 लोग हिरासत में हैं। बहुत जल्दी इनकी जो स्लीपर सेल हैं वो भी हिरासत में होंगे। चलिए देखिए, अभी आपदा पूरी तरह से टली नहीं है, चैलेंज अभी भी है, लेकिन अभी तक जो अचीव किया गया है उसके लिए सबको ये क्रेडिट जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया है। Thank you for speaking with us, Dr. Narottam Mishra, Home Minister of Madhya Pradesh, with us here. Now quickly, let's move on, ladies and gentlemen, and ask our two experts this evening whether or not the government of India has taken the right stand. Dr. Tara Karta, former Director, National Security Council Secretariat, will be joining us live, and Abhijit Iyer Mitra, Senior Fellow, Institute of the Peace and Conflict Studies, is also with us. Abhijit Iyer Mitra and Dr. Tara Karta, namaste. Abhijit, let me start with you and ask you: has the government of India taken the right stand? Have they gone about it the right way? Under sections 3 and 4, they've called it an unlawful association. They've not called it a terror organization under section 1. But they have they're moving towards a comprehensive ban and also crippling the finances and also social media footprint. Absolutely. Look, first the process was right. They didn't ban it and then look for proof. They've gone about because this is a Hydra-headed organization. They've learned from Pakistan where everybody has their civil organization, their charity organization, and then their terror wing. PFI has spread like this into many Hydra heads. And what they've done is they've raided all of them. They've collected the requisite amount of proof that satisfied them, and then they've gone in for a ban. And this is what you need to do
if you fear that some organization is ultimately going to be become a terror organization. The problem with classifying a terror organization has always been that it's impossible to prove that A, B, C or XYZ is going to explode a bomb somewhere, right? So there are new definitions required for this. You need to be proactive in this because, you can't wait for a bomb to go off and then cry yourself hoarse. Now, the problem here has always been how do we navigate that legal boundary between proactive banning or post facto banning? And I would say in cases of national security, it is probably much better to go in for proactive bans, given that this is not a political organization that we're talking about. This is a political propaganda organization. Rather, it is a religious propaganda organization, which should not be given the protections that political organizations are given. Dr. Tara Karta? No, I think it's certainly the right way to go about it, that you are cutting off, like Abhijit said, something which has grown, like I said earlier on your show, it has grown hugely over the last 10 years. It's kind of created this whole atmosphere of hatred, and that is what I am really, really upset about, is that there is this, they fuel this sense of alienation from the majority community. From that comes the terror attacks by a few, who've joined up with the Islamic State, who've joined up, the attack on the Kabul Gurdwara and so on and so forth. That is a very small percentage. But that climate of hatred which they've created is what is dangerous and is what we need to reverse. But having said that, I mean, banning something is the easiest task actually. Now comes the next step. I mean, they will reinvent themselves into something else. There is the question of the resentment of these cadres, particularly students, the young people who've joined some of these organizations, sometimes on genuine causes. Let's not forget that. Sometimes the causes have been genuine. So the question is, how do you prevent this from coming up again in another form and doing the same things these guys did for years? It's a very, very organized one with and remember, it's very curious. It doesn't keep a record of members. So which is very unusual. So it's a kind of the shadowy organization which probably is still there. I mean, you can ban it till the cows come home, but this sentiment of hatred that has been fueled is going to remain. So how do you deal with that? That is my question. My suggestion is, if I can say, just give me a minute, is that you hive away whatever is the social work that they're doing, whatever the good that they're doing, and try and rework it into another organization which can then receive formal state support. So, okay, you're doing welfare work, go ahead and do it. That reduces the hatred, that reduces the cadres, that reduces the suspicions. That's one way to go. But in doing that, you're also taking a risk, because you do not know who's radicalized and who's not, because they have always posed a very, very benign front, despite what their real intent is. Abhijit Iyer Mitra, it cannot stop here. You cannot say, okay, we have done the crackdown, we've done all of this, now it's over. It doesn't stop here. Perhaps the work just starts now. It is. This is just the beginning. We can't see this as the end. As Tara ma'am said, this is just the beginning, because now what you'll have to do is you'll have to keep putting the people who associated with the PFI under the scanner. And remember, they've got a whole bunch of overground workers, be it lawyers or so-called public intellectuals, etc., who will support them. What are you going to deal with that? Because see, their job specifically is to carry on the radicalization through other means. What are we going to do about that? What are we going to do about the same people reassociating in different forms? Remember, PFI itself is a sort of reforming of the SIMI which got banned. I'm not saying this, it's the government that's saying this, right? So what do we do about that? That is point number one. Remember, even in cases of charity and good work, if you remember, Hezbollah in Lebanon started off as a charity organization, where the state capacity was extremely limited, where the Lebanese government could not provide any kind of services, health, anything of that sort to the average Shia in Lebanon. This is how Hezbollah grew,
And then they based their military wing. They used it as a front for money laundering, and they based their entire military wing. And today they're one of the most powerful. Right. They're almost like a state within a state. So we also have to prevent that out here. And there's really no easy ways here because there's too many shades of grey here. We don't know when one metastasizes into the other. Very well said. We just have to keep our antennas up, our eyes open, our ears always to the ground and listening, and to try and nip this into the bud, not allow it to become a hydra over a decade and a half and then move to crack it down, because sometimes you cannot weed out everything. You cannot weed out all of the grass. There will be those which will sprout back again, and that's the big danger as far as society is concerned. Dr. Tara Karta and Abhijit Iyer Mitra, thank you very much. Keeping this conversation short today because I want to do justice to Jammu. Ladies and gentlemen, it's a very special effort. We're up next after the break. Stay with us here on The Right Time. Officials have just arrived. The ban was welcomed by most state governments. This is a very, very welcoming move. PFI and CFI create the fertile ground. Al-Qaeda Indian subcontinent can recruit it. जो minorities है उसमें घुसकर वहाँ पर अनरेस्ट निर्माण करना, वहाँ पर इंडोक्ट्रिनेशन करना, फंडिंग की भी अपनी व्यवस्था की है, छोटे छोटे अकाउंट निकालकर उसके माध्यम से किसी के ध्यान में ना आए इस प्रकार से ये टेरर फंडिंग कर रहे थे. But politics wasn't far behind, with many opposition leaders questioning the move. Every Muslim youth will now be arrested with a PFI pamphlet under India's black law UAPA. How come PFI is banned but organized associated with convicts of Khaja Ajmeri bomb blast are not? Why has government not banned right-wing majoritarian organization? Bans really have not worked in the past. The same people can work with a different name in a different organization. Earlier RSS were banned thrice. I just stopped them. For several years now, PFI has been one of the biggest threats to India. Their members chopped the hand of a college professor in Kerala. They've been behind cold-blooded murders of right-wing members and obtained explosives to target prominent people and places. So why object to a crackdown on such a radical organization? All right, so what exactly does it entail? What are the implications of the ban of the PFI for 5 years? It's now been declared as an unlawful organization. What it means is you cannot be a member of this organization anymore. If you are becoming a member, then automatically you will be treated as a criminal. Also, forfeiture of property. The PFI as an organization cannot own any property because once the organization is banned, then it has to forfeit the properties in its name. It cannot organize. Articles of association will not happen or will not apply for an unlawful organization. Like the PFI, they will not be allowed to bring groups of people together and organize protests. Also, they cannot be taking donations. Remember, many organizations ask for donations, organize seminars, workshops, etc. None of those the PFI will be able to do. They can also not publish under the PFI name any more of their propaganda material. And also, most importantly, and I think this is where the nub of the fight is, their bank accounts. They will not have access to any financial resources. Bank accounts in the name of the organization will be frozen. Also, their properties, offices will be attached. There will also be travel curbs on their office bearers. They will not be allowed to travel far and wide if associated with the PFI. Let me now go across to Arunima, my colleague who's been tracking this story. Now, one of the things that you've heard from political parties as well as other experts and analysts is that a ban doesn't materially amount to anything on the ground, because today you've banned PFI, they can metamorphosize into something else, just like you did Simi a few years ago. Simi went on to become PFI. So how does the Home Ministry explain how they intend to counter that? Well, this is not a version that they are supporting at all. In fact, senior police officials in states also who are
dealing with PFI in their role of anti-terrorism unit, they also are saying this ban coupled with the All India action, the All India crackdown that has happened in the last 2 weeks, that has given them a huge leg up as far as their fight against a Popular Front of India-led radicalization and quote-unquote terror is concerned. Why are they saying that? First point they're saying is that it is not easy to regroup, because now that PFI is a banned organization, anybody who was associated is on the radar of intelligence agencies, state police agencies. So if you become a sleeper cell and if you become from dormant, you become active, you will be immediately on the scanner of the agency. So that's point number one. Second, they're saying, where will you get a committed leadership from? All the top leadership is now in custody. Now that PFI is a banned organization, there is greater chance of them not being, even if they are set free, there is a very less chance of them able to put together an organization like PFI. So getting a committed leadership is the second most important difficulty. Third, as far as funding is concerned, we have learned that the National Investigation Agency has already frozen the main PFI account in which donations came, and now every other donation will be monitored as well. So there were some experts who were saying that what about the dark web, what about crypto? There are other ways to get donation. So the police men and women I spoke to are confident that now that PFI has been banned and the top leadership is in custody, together these two moves will ensure that they have a greater a tighter grip on that funding route as well. They're hoping interrogation of the chairman, the national executive members will give them more insight as to how this funding was being done, and that will help them prevent it. All right, we'll leave it at that. Thanks very much, Arunima, for joining us with your perspective and details of what is the rationale, what is the thinking behind this ban. Let me now go across to our guests who are joining us. Vikram Singh, former DGP of Uttar Pradesh, Swapnil Kothari, senior lawyer, Abhijit Majumdar is consulting editor with First Post, and Maulana Ali Qadri, Islamic scholar, also joining us. Maulana Qadri, मैं आपसे शुरू करूंगा. पिछले हफ्ते 10 दिन में करीबन 300 जगहों पे रेड हुए हैं. 300 से ज़्यादा PFI के या तो नेता लोग नहीं तो उनके कार्यकर्ता लोग अरेस्ट हुए हैं. उनमें से काफ़ी सारों को कोर्ट्स ने पुलिस कस्टडी, शायद NIA कस्टडी हो या बाकी पुलिस एजेंसीज जो हैं उनके कस्टडी में भेजे हैं. इनके यहाँ से काफ़ी सारे इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स भी रिकवर हुआ है. तो ऐसे एक संगठन को हम प्रोत्साहन क्यों देना चाहिए सर? इसको बैन करने का Namaste and Jai Hind. It's been a long time that I've been wanting to be here, and finally it has happened. I am in Jammu. I've always had an issue with the Jambalians who have come back and said कि आप हमेशा कश्मीर चले जाते हो, श्रीनगर चले जाते हो, जम्मू भी आया करो. And we are here in Jammu, and we will talk to the people and residents of Jammu. It's been a very, very eventful day, ladies and gentlemen. PFI has been banned, its affiliates, fronts have been banned. They were carrying out an agenda that perhaps many believe was manifest in the 90s in Jammu and Kashmir. And were they trying to take that pan-India? 3 years since the abrogation of Article 370, Jammu में क्या बदला है? जम्मू कश्मीर में क्या बदला है? और आगे जाके क्या होगा? Because elections are impending. What are the expectations? And of course, we'll try and sort out some of the narratives that are being spun. With us is perhaps a very, very august gathering, which at such short notice, I myself personally am very glad that we were able to manage, and I thank them right at the outset. First up with me, Dr. S.P. Vaid, former DGP, Jammu and Kashmir. Namaste, sir. Namaste. Thank you very much. Good to meet you in person. Thank you, Anand. We have Rajiv Chunni, representing the POJK refugees. Namaste, Rajiv ji. Thank you very much. Namaste. Dr. Agnishekhar, representing Kashmiri Pandits. Namaskar. Namaste, Thank sir. you. Namaste and Jai Hind. Thank you very much. And Dr. Gopal Sarthi Sharma, representing the Dogras. नमस्कार. 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 Thank you very much. तो सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं, गोपाल सारथी जी. एक बात बताइए, आज देश में जो सबसे पहले whatever has happened, the banning of the PFI and its affiliate organizations, how do you view this? From Jammu Kashmir's point of view, I think since we are at a border state, and I think such organizations, formations, they should be crushed, they should be booked under particular laws, and I think this is a welcome step. Is this a timely step, or is it too little too late? Let me ask you, Agnishekhar ji. मुझे लगता है बहुत देर के बाद एक कदम उठाया गया है. पहले से हो चुका होना चाहिए था, और कई ऐसे कदम जो उठाए जाने हैं या जा रहे हैं वो भी बहुत लेट है.
जिसे संगीत में कहते हैं ना विलंबित राग है ये। हाँ, विलंबित और राग ये है। विलंबित राग है और इसको बहुत पहले से उठाया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे भाई साहब ने कहा ये सीमा प्रांत देश है। हाँ। इसकी विशेषता अलग है। हमारे वैद साहब है वो उसके अधिकारी हैं, और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है आपका, इस पर तो स्पेशल अटेंशन होना, इसमें कोई आपको डिले करने की कोई नहीं बनती है जवाजियत। नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के साथ भी कोर्ट सब कह रहे हैं इट इज टू लेट। नहीं, कोर्ट इतना ही नहीं करा। अगर आप उस मुद्दे पे आए तो ये इट्स ए शॉकिंग कि जुडिशरी 4 बार टर्न डाउन करती है आपका। जब आप जाते हैं कि हमारे इशू को एड्रेस करिए, सुमोटो आपने नहीं किया, हम सप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन आप टर्न डाउन करते कहते इट्स वेरी लेट। या आप एग्जीक्यूटिव के पास जाइए। और 32 साल से हम किन के पास जा रहे थे? 32 साल से वी हैव बीन क्राइंग, फाइटिंग एंड डिमांडिंग आवर राइट्स टू बी रिस्टोर्ड। दैट्स हमारी घर वापसी, जिसे आप कहें ना, कश्मीर वापसी, जिसे हमने कहा कि वहाँ रिजेक्शन है कोएग्जिस्टेंस का। और इतना कुछ जो कुछ हुआ है उसका वेलकम करते हुए मैं आपको मूल बात की जो कोर इशू ये है, अब वहाँ एकदम जिहाद है, इट्स नॉट मिलिटेंसी। वहाँ आपका रिजेक्शन है, वहाँ जेनोसाइड है। इट्स नॉट कि कश्मीरी पंडितों को निकालना पड़ा। और जब तक कि उस जेनोसाइड को रिवर्स करने के लिए आपके पास कानून भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जेनोसाइड को ट्राई करने के लिए, पनिश करने के लिए, ये करने के लिए हमारे पास नहीं है उसका। चूंकि भारत कन्वेंशन ऑफ जेनोसाइड का सिग्नेटरी होने के बाद भी 59 में आपने रेक्टिफाई भी किया, लेकिन कानून नहीं है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि भैया इसको एड्रेस करो संविधान, संसद में आप प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड बिल लाइए, और उसके हिसाब से क्या होगा कि आपका रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड के लिए रास्ता खुलेगा। करेक्ट। व्हाट इज सिमिलर to the operation of the PFI and what its intent was to what we saw in the 90s in Jammu and Kashmir, and what is different? See, what PFI was trying to do is, in collaboration with international terror organizations, in collaboration with international forces, whether it is based in Turkey, whether it's based in China, based in Middle East, Pakistan, trying to do Ghazwa-e-Hind, trying to do radicalize the youth, Muslim youth, gullible boys in India, and create badge between the two communities, give arms training to those young boys. You saw there a document in Patna which was revealed how they were planning to have a Islamic rule by 2047, assassinate the Prime Minister. They are involved in number of communal rights across the country, and so many violent incidents in Kerala and many other states. Some similar things have been happening in Kashmir. In fact, 90s mein, it was a mini Ghazwa-e-Hind, what was done in Kashmir. And I would see it is a larger version of what happened in Kashmir trying to do in India. And I'm glad that government has, whether it is a surgical strike, action has been taken, and it was required. We must decimate such organizations who are out there to destroy India's unity and integrity, a multicultural society. We are at Baghe-Bahu. The story behind this is that the founders of Jammu decided to set a capital or set a kingdom here because they saw the Bagh and the Bakri drinking water from the same pond. That's the iconic steps of Baghe-Bahu. So that's what makes this special. But यहाँ तो बाघ बकरी का चोगा ओढ़ के घूम रहा था कि भाई मैं तो बकरी हूँ. आपको लग रहा है कहीं ये चल रहा है? बिल्कुल ऐसा है कि ये बिल्कुल फेमस स्टोरी है कि कैसे जम्मू एस्टैब्लिश किया गया, और जम्मू का कल्चर भी वैसा है. अगर आप देखें, जम्मू ने एक्सेप्ट किया जब 90s में कश्मीर में ही हुआ, कश्मीरी पंडित भाइयों को यहाँ एक्सेप्ट किया. उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम्स को अटैक किया जो नेशनलिस्ट थे या पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको अटैक किया. उन्होंने भी यहाँ आकर घर बनाए. लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों में ये फीलिंग होती है जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि 2.5 डिस्ट्रिक्ट रह गए हिंदुओं के, तो उनको लगता है कहीं मिनी गजबे हिंद तो हमारा तो नहीं हुआ. आपने कश्मीर से हिंदुओं को भगाया, आपने जम्मू के पहाड़ों से इनको भगाया, अब जम्मू में इस तरह से अगर आप करेंगे तो वो एक सेंटिमेंट राइट और रॉन्ग इज देयर. सो आपने जो कहा कि बकरी एक बाघ एक बकरी का चोला बैठ के, यस, to some extent that is visible here. That is why people have these apprehensions. Otherwise, Kashmir based leadership should have developed. Jammu has as much potential of tourism as in Kashmir. If you see, since 47,
Not even 10% budget has been spent in Jammu region. 90% goes to Kashmir. This is a very strong feeling in Jammu region. And I'm going to ask Rajiv Chunni ji, Rajiv ji, वेस्ट पाक हिंदूज के लिए सीएए का नोटिफिकेशन कब आएगा? इसके इंतजार में कितने लोग बैठे हैं? एंड डू यू बिलीव दैट दोज हु हैव कम फ्रॉम पीओके और पीओजेके दे हैव बीन गिवन देयर ड्यू इवन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370? पाकिस्तान की बंदूक से जो पहली गोली चली थी वो मेरे लोगों की छाती पर चली थी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ के इलाके, थोड़ा सा माइक ऊपर, जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, ये सारा इलाका पाक अधिकृत कश्मीर है और ये लोग बोनाफाइड जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। उसके बावजूद हमारे साथ जातियां होती रहीं। फिर आ गए वेस्ट पाकिस्तानी जिनका आपने जिक्र किया। ये वो लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के विक्टिम हैं। इनको पंजाब जाना था, ये गलती से जम्मू कश्मीर आ गए और ये वापस जा रहे थे। और शेख अब्दुल्ला साहब जो इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको रोकते हैं हीरानगर के पास, बहुत बड़ा काफिला था। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। कहने लगे आप यहाँ रहिए, ये भी हिंदुस्तान है। और वो लोग थोड़े जानते थे। उन्होंने कहा यहाँ कैसे रह सकते हैं, यहाँ तो महाराजा हरि सिंह जी ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून बना रखा है और हम तो यहाँ के नागरिक नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपको दूंगा, आप यहाँ रहिए। रखा। 75 ईयर्स हो गए, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं मिले। उनकी 3 पीढ़ियां यहाँ पैदा हुई लेकिन स्टेट सब्जेक्ट का राइट नहीं मिला, नौकरी नहीं कर सकते थे, कॉलेज में नहीं जा सकते थे। मैंने कई बार फारूक साहब से, उमर साहब से, मुफ्ती साहब से ये बात कही कि कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं है। आप इन लोगों को जो इतने सालों से रह रहे हैं इनको दे दीजिए, आप सारे लोगों को ना दीजिए लेकिन इनको दीजिए। लेकिन उनकी जिद ने क्या किया कि यहाँ जब धारा 370 हटी, 35 से हटी, वो सारे लोग यहाँ के नागरिक हो गए। आज उनको यहाँ डोमिसाइल मिले, वो बड़े खुश हैं। आप इनकी क्रिश्चियंस की बात कर लीजिए, आप वाल्मीकिस की बात कर लीजिए, आप गोरखास की बात कर लीजिए, आप पश्चिमी पाकिस्तानियों की बात कर लीजिए। हालांकि मेरे लोग तो यहाँ के बोनाफाइड सिटीजन्स थे, उसके बावजूद हमने इसका स्वागत किया, इसलिए क्योंकि धारा 370 रहने के बाद, 35 से रहने के बाद भी, मेरा यहाँ की नागरिकता होने के बाद भी मुझे वो अधिकार नहीं दिए गए जो मिलने चाहिए थे। और मैं क्यों नहीं दिए गए? आपको क्यों लगता है इन्होंने मना क्यों किया? देखें, एक माइंडसेट था जिसकी चर्चा सारे मेरे पैनलिस्ट ने की है कि जो कश्मीरी माइंडसेट था। और मैं एक बात और बता दूं, तिब्बत से कुछ लोग आए जो मुस्लिम परिवार थे, उनको यहाँ स्टेट सब्जेक्ट का राइट दे दिया गया और वो लेह लद्दाख में जाके सेटल हुए। तो यानी ये तो पूरी तरह कम्युनल एजेंडा हो गया। कम्युनल एंड पॉलिटिकल वोट बैंक या डेमोग्राफिकली चेंज करने की कोशिश थी कि भाई इस एरिया को हमेशा के लिए गैर मुसलमानों से रिक्त कर दो। बिल्कुल, कश्मीर में कश्मीर के अंदर तिब्बत कॉलोनी है। जो तिब्बत से आए लोग हैं, चाइना के उस हिस्से से। और वो बौद्ध हैं कि मुसलमान हैं? मुस्लिम लोग हैं। उनको स्टेट सब्जेक्ट का राइट दिया गया। मैं चूंकि हिंदू था, और मैं एक बात बता दूं, मेरे पे इसीलिए हमला किया गया, पाकिस्तान ने किया, चूंकि हम हिंदू और सिख थे और वो नहीं चाहते थे यहाँ कोई हिंदू सिख रहे। वो पूरी तरह से डेमोग्राफी को बदलना चाहते थे। गोपाल सारथी जी, द होल एजेंडा तो पूरी तरह से कम्युनल हो गया। आप ये कह रहे हैं कि फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर्स जो यहाँ पर थे वो डेमोग्राफिकली नहीं चाहते थे कि कोई भी नॉन मुस्लिम ग्रुपिंग यहाँ पर पहुंचे। ये बात सही है, गलत है? उनको जम्मू में रखिए, कश्मीर में मत आने दीजिए। देखिए, ये लफ्जों का हेर फेर हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक हार्ड फैक्ट है कि कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप का एजेंडा जो रहा है टोटली कॉम्युनल रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी नोज दिस थिंग, नेशनली एवरीबडी नोज दिस थिंग, विद इन स्टेट वी नॉट ओनली नो दिस, वी आर फेस्ड इट। सो आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है, एजेंडा इनका कॉम्युनल है। और जहां तक अगर मैं जम्मू की बात करूं और जम्मू प्रोविंस की बात करूं, जम्मू प्रोविंस में नो डाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, वाल्मीकिस, देयर आर सो मेनी पीपल, लेकिन जम्मू की इक्वालिटी रही है। वी आर द रियल कॉस्मोपॉलिटन पीपल। 1947 से आप ले लीजिए, 47 की माइग्रेशन, 65 की माइग्रेशन, 71 में माइग्रेशन, 89 में माइग्रेशन, डोडा किश्तवाड़ से माइग्रेशन, रियासी के अपर रीचेस से माइग्रेशन, एवरी माइग्रेशन वी हैव एक्सेप्टेड विद ओपन आर्म्स। और ऐसा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है हमारा, हमें कभी किसी से कोई शिकवा, कोई गिला नहीं। यहाँ से सब जगह से माइग्रेशन हुआ इनटू जम्मू। यस। अब ये 370 के बाद जो लोग वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वहां से वैली से नेता कह रहे हैं आप डेमोग्राफिकली चेंज कर रहे हो, आप लोगों को बिहार से भेज रहे हो, जम्मू से लोग यहाँ आकर हमारी जगह, हमारी जमीनें छीन लेंगे। वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? देखिए, जहां तक जम्मू का है, वी आर वेरी प्राउड कि एटलीस्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट इज अ डिस्ट्रिक्ट जहां जम्मू कश्मीर की हर एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी है। करेक्ट।
और सिर्फ ये नहीं है, अब चूंकि 370 हट चुका है, अब मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, मैं नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। हाँ। आप अभी देख लीजिए, दुर्गा पूजा के पंडाल लगे हैं यहाँ पे रामलीला भी हो रही है, दुर्गा पूजा भी, यहाँ छठ पूजा भी होती है, यहाँ पे गणपति का उत्सव भी होता है। ये वो जम्मू है। हाँ। अब अगर कोई ये कहे, मैं ये कहता हूं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का एक एक इंच एक एक हिंदुस्तान के जो वासी है उसका है। जिस तरह पूरे भारत में हर आदमी कश्मीर से भी जाके सेटल हो सकता है, इस तरह से अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई यहाँ नौकरी करना चाहता है, कोई यहाँ काम करना चाहता है, उसको पूरा हक है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और जब मैं गवर्नमेंट सर्विस करने के लिए गुड़गांव दिल्ली गया तो मैं गुड़गांव और दिल्ली रहा, तो वहाँ का आदमी यहाँ क्यों नहीं रह सकता अगर वो सर्विस करता है। और मैं जैसे आपको बात कर रहा था, बहुत सारी जगह हैं जम्मू में जिनको यहाँ टूरिज्म पोटेंशियल है और उनको प्रमोट नहीं किया। आपको जानकर हैरानगी होगी, एक गूल जगह है। हाँ। गूल में एक घोड़ा गली है, वो महाभारत के टाइम में जब अज्ञातवास पांडु आए थे, उन्होंने वहाँ स्कल्पचर किया है, घोड़े और उस पर 2-2 आदमी सवार है। ये पूरे भारत में ऐसी जगह नहीं है, लेकिन आपके उस एरिया को कनेक्ट तक नहीं किया, उसके एरिया की कोई डेवलपमेंट नहीं की। आपको पता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में लोगों को पता नहीं है, देश में क्या पता होगा। यहाँ एक मानतलाई जगह है, वहाँ सुध महादेव जहाँ भगवान शंकर और पार्वती की शादी हुई थी, इतना ब्यूटीफुल। और मानतलाई जहाँ वो जो क्या नाम था उनका, वीरेंद्र ब्रह्मचारी, उनका आश्रम है, उसको डेवलप किया जाए, इतनी खूबसूरत जगह है। बहुत सारी जगहें, डोडा, किश्तवाड़, लाल द्रमन, जई और बहुत सारे पाडर, इतने खूबसूरत जगह हैं हमारे डोडा, किश्तवाड़ में और रजौरी, पुंछ में, जिनको अगर डेवलप किया जाए। लेकिन कश्मीर बेस्ड लीडरशिप ने 75 इयर्स में जम्मू रीजन में एक स्ट्रांग फीलिंग है कि उनको बिल्कुल कनेक्ट तक नहीं किया, उनको डेवलप नहीं किया। So that negligence has to be overcome, but आपको लगता है 3 साल में हुआ है? और ये कश्मीरी पंडित का रिपैट्रिएशन, इसमें क्या मसले हैं? Why are pandits not wanting to go back? और जब जा रहे हैं तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमें एक ग्रुप में भेजिए, जहाँ से हम आए हैं, हमारा जो कोर गाँव है, वहाँ जाके हम नहीं बसना चाहते। ये एक डिमांड रही है, जरा इसको बताएं। देखिए, हम 32 साल से सारी संघर्ष यही है, यू वांट टू गो बैक, क्योंकि वहाँ रिजेक्शन हुआ आपका। करेक्ट। वहाँ कोई साइन नहीं है कि आपका वेलकम और को एग्जिस्टेंस है। करेक्ट। तो ऐसे में ये जो झूठ कहा जाता है कि अपने अपने घरों में, अपने अपने घर है नहीं, किसी का अपना घर है नहीं, वहाँ जला दिए जा चुके हैं या बेचे जा चुके हैं या कब्जा कर लिए गए। तो आपको वन प्लेस सेटलमेंट की जरूरत है। और वो वन प्लेस सेटलमेंट में जब आप जियोपॉलिटिकली देखें, एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, वो सारे आपको इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल सारे राइट्स मिलने चाहिए। ये कोर इशू हमारा है। करेक्ट। कोर इशू जब इस पर आप आएंगे तो आप बेसिक कोर इशू को एड्रेस करना शुरू करेंगे कि कोर इशू है कि व्हाई आई एम आउट फॉर द लास्ट 33 इयर्स। मैं आपकी एक बात और इस आर्गुमेंट को मैं मानता हूं कि जब आप जाएं तो एक ब्लॉक बनकर जाएं और एक ऐसे कंसंट्रेशन में जाएं ताकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका इतना होल्ड हो। आपका जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड नहीं है कश्मीर में आज की तारीख में। मैं आपका आर्गुमेंट मैं समझता हूं। आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाट दे वांट इज दैट दे आर इन अ साइजेबल नंबर सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस एन असेंबली एंड दे हैव द क्लाउड इन टर्म्स ऑफ वोटिंग क्लाउड, बिकॉज व्हेन यू हैव अ वोटिंग नंबर, व्हेन यू आर अ ग्रुप एज अ वोटिंग नंबर, देन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू लिसन टू यू एंड यू विल हैव अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू गेट योर थिंग्स डन। सो दैट्स वन पॉइंट। बट एक और बात ये है कि हाँ, कोई भी अटैक गलत है, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर इट इज लेस देन 20 हिंदूज हु हैव बीन टारगेटेड बाय द टेररिस्ट, बट एवरी टाइम देयर इज एन अटैक द होल माहौल इज हम कश्मीर छोड़ के जाना चाहते हैं। इन द 90s द एस्टैब्लिशमेंट वाज नॉट बैकिंग यू। Today the establishment is not just standing with you, but they are standing in front of you to try and clean up the entire system and work this system. My question to you is it fair for the entire Kashmiri Pandit group to say we are moving out of Srinagar, don't send us back, we are coming back to Jammu, the moment there is one incident that happened? And I'm not discounting lives or I'm not saying that what happened to the Kashmiri Pandits, nowhere. I've been one of the foremost in front. आप मेरी बात समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ 20 हिंदू मरे हैं, वहाँ 40 मुसलमान मरे हैं, नेशनलिस्ट मुसलमान मरे हैं। पर मुसलमान तो कश्मीर छोड़ के भाग नहीं रहा है, वो वहाँ रुका हुआ है, वो फिर भी लड़ रहा है, वो फिर भी झंडे लगा रहा है, वो फिर भी कह रहा है कि मैं आगे आके अपनी बात कहना चाहता हूँ जो इतने साल मैंने नहीं की। तो ऐसे माहौल में क्या कश्मीरी पंडितों को, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप आवाज़ उठाइए, लेकिन
फिर मैं वापस जम्मू जा रहा हूँ, ये बोलना ठीक है कि नहीं अग्निशेखर जी? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका सवाल आपके एंगल से बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे नहीं पर्टिनेंट है आपका क्वेश्चन, लेकिन आप इसमें डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भूल रहे हैं। जैसे मैं जिस मोहल्ले में रहता था 27 कश्मीरी हिंदूज वहां थे, और किन में, और 20,000 कश्मीरी मुस्लिम में पड़ोसी थे। जब 20,000 मेरे पड़ोसियों ने 27 घर कश्मीरी हिंदुओं को नहीं बचाया, वो साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल टेररिज्म की आप कल्पना करिए। और वो मैं समझ गया। और जो बेचारे मुसलमान मर गए, जो निर्दोष थे, जो नेशनल कॉज के लिए मरे, और हार्ट गोज टू देम, हम जस्टिफाई नहीं करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहना पड़ रहा है। आई वॉज किल्ड बिकॉज आई वॉज हिंदू, दे आर बीइंग किल्ड नॉट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, दे आर नॉट विद देम। एक गांव में एक स्कूल है, उसमें हमारी एक बच्ची है, वो टीचर है, और उसमें जब वो सेफ नहीं है और ओपनली थ्रेट्स आ रही हैं, जो अभी हुआ है कि विल नॉट, आप तो खोमचे वालों को नहीं बख्श रहे हैं, आप बिहार के मजदूर को नहीं बख्श रहे हैं, हमको क्या बख्शेंगे? ये जो 75 साल का कैंसर है वो ओवरनाइट खत्म नहीं होने वाला, उसमें टाइम लगता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन लिए, जैसे आप ही बोल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लीन अप किया, बहुत सारे चीज़ें की, बैन किया, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें और करने की ज़रूरत है। एक जैसे कश्मीरी पंडितों का मैं समझता हूँ एक कंपोजिट प्लान बनाने की ज़रूरत है। अगर आप एक रिमोट गांव में शुपैया या कुलगाम में किसी टीचर को भेजेंगे, वो मारा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, उसका अपना सर्वाइवल का इशू है। आप पाकिस्तान में हालात जानते हैं, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, फ्लड के करोड़ों लोग बेघर हुए हैं। तो वहाँ एस्टैब्लिशमेंट को अपनी एग्जिस्टेंस रखने के लिए यहाँ इंसिडेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना उनका वहाँ वो ओवरथ्रो हो जाएंगे। तो ये सारे जो आप देख रहे थे किलिंग्स हो रही थी, ये उसका ही एक हिस्सा है। अदरवाइज़ उनका काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है और इसको काफ़ी हद तक करना पड़ेगा। बहुत सारे और कदम लेने की ज़रूरत है, जैसे अभी भी मदरसा चलते हैं, जिस तरह यूपी में एक्शन हो रहा है, यहाँ भी ज़रूर मदरसा सर्वे करने की ज़रूरत है। और उन पर क्या देखने की ज़रूरत है कि रेडिकलाइजेशन हो रही है, ऑनलाइन अगर हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू, उस पर रोक लगना जरूरी है। पर आपको लगता है कि दे शुड एक्चुअली गो एज अ ब्लॉक, दे शुड बी इन वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वेयर दे बिकम अ साइजेबल कम्युनिटी एंड दे शुड बी इन व्हाटएवर डिस्ट्रिक्ट्स दे आर सेंट बैक इनटू? आपको लगता है कि दे शुड बी सेंट बैक इन एन इलेक्टोरल नंबर, कि कम से कम 15-20 हज़ार 30 हज़ार फ्लैट्स एक साथ एक डिस्ट्रिक्ट में जाएं, ताकि उनका एक नंबर हो और उस वार्ड में, उस इलाके में, उस काउंसिल में उनका एक पॉलिटिकल क्लाउड हो? Yes, that will not only ensure that administration is accountable, even political accountability will come, because politicians will also look for the vote bank, and if they become a sizable number, I think that will help. जम्मू में डोगराज हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। एक बात है कि सबकी बात होती है, लेकिन डोगराज की बात नहीं होती। तो अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग एक जगह ऐसी जगह सैंडविच्ड हैं, डोगरा कम्युनिटी नहीं, जम्मू वासी भी, कि कश्मीर से पैन इस्लाम का एजेंडा पाकिस्तान पुश कर रहा है और पंजाब से खालिस्तान का। तो ये जो K2 एजेंडा है, तो जम्मू बहुत फर्टाइल टर्फ बन जाता है। अगर रिसेंटली अगर हम देखें तो ड्रोन्स ड्रॉपिंग्स, सुंजवान में जो हुआ, और काफ़ी सारे अटैक्स हैं, जो शिफ्ट थिएटर ऑफ एक्शन जम्मू में हो रहा है। आप क्या कहेंगे इसको? जम्मू का हिस्टोरिकली जो रहा है, जम्मू नो डाउट इट इज सैंडविच्ड बिटवीन कश्मीर एंड पंजाब, बोथ द डिस्टर्ब्ड एरियाज, बट जम्मू का एक अपना कैरेक्टर है। जम्मू का, जैसे मैंने पहले कहा, एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है। जम्मू ने सबको एम्ब्रेस किया है, लेकिन एम्ब्रेस आउट ऑफ वीकनेस नहीं किया है, आउट ऑफ स्ट्रेंथ किया है, बिकॉज जम्मू इज द रीजन विच इज सेंडिंग मोस्ट वॉरियर्स इनटू द इंडियन आर्मी। मैं तो कहूंगा कि 370 हटने के बाद एक मीनिंगफुल डायलॉग जम्मू के चैम्बर के साथ, जम्मू की इंडस्ट्रीज के साथ, जम्मू के ट्रेडर फेडरेशंस के साथ, जम्मू की जितनी डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन को एक मीनिंगफुल डायलॉग करना चाहिए कि भाई इतने 70 सालों में जो पाइल अप आपके इश्यूज हुए हैं, थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट, वी हैव गॉट IIM, वी हैव गॉट IIT, वी हैव गॉट एम्स, एंड नो डाउट देयर इज अ लॉट ऑफ construction happening around all these, but there are certain issues. Still there are issues. I'm just going to ask Rajiv ji that there are so many representatives of so many organizations. सुने किसकी? That is also another problem, no? They are not ready to sit together. The organizations are not ready to sit together and pose a united front. They are not ready to agree that there will be 3 people who will go forward and talk to the government. नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताऊं ऐसा नहीं है।
कि ऐसा नहीं होगा कि गोपाल सारथी से बात की, मुझसे बात नहीं की, 370 और 35 से हटने के बाद भी फोकस कश्मीर था, आज भी फोकस कश्मीर है, मैं ये कहूंगा। इसलिए हमारी नहीं सुनी जाती। ये कहना कि आप बहुत हैं, मैं कहता हूं आप इनसे पूछ लीजिए इनके कितने संगठन है कश्मीरी पंडितों के, बाकी लोगों के कितने, बहुत संख्या है, लेकिन बात होती है, लेकिन हमारी बात नहीं होती। हालांकि मैं पहला विक्टिम हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा 5 लाख व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं, तब की सरकार ने कहा था आपके लिए पर्याप्त जगह नहीं है, अन्य राज्यों में बिठाए गए। क्या आज उनको यहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? दे आर बोनाफाइड। और आज ये चिल्ला रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब महाराष्ट्र से मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं और मुफ्ती साहब जाके यूपी से बनते हैं और मंत्री बनते हैं, लेकिन वहां से व्यक्ति आने वाले, और वो व्यक्ति वहां के नहीं है, वो मेरे मुजफ्फराबाद के, मीरपुर के और पुंछ के लोग हैं। उनको देने में क्या दिक्कत है? और जो पश्चिमी पाकिस्तानी जिनकी 3 पीढ़ियां यहाँ पैदा हुई, यहीं पर पले, यहीं पर जन्मे, क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये किस बारी व्यक्ति की बात कर रहे हैं? इनह्यूमन है। और ये जो बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जब अपनी बात आएगी, अभी आजाद साहब ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिस दिन उन्होंने पार्टी लॉन्च की, तो पिछली कुर्सियों पर बिहार और यूपी के लोग बिठाए गए भरने के लिए, तब आपको चाहिए। लेकिन जब आपने वोट का अधिकार देना है तो आपको दिक्कत हो जाती है, आप पीछे हट जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये दोगली नीति हमें छोड़नी पड़ेगी और बड़ी सारी चीजें हैं जो आज जिनको ठीक करने की जरूरत है। और आज धारा 370 और 35 से हटने के बाद भी, ठीक कहा मेरे साथी डॉक्टर साहब ने, कि जम्मू की बात आज भी कहीं किसी जगह नहीं होती, ना किसी टेलीविजन चैनल में आज आपने उठाई है, ना किसी और जगह। बिल्कुल। वैद साहब, फाइनल कमेंट्स, आई हैव टू क्लोज the conversation. See, one positive aspect is I totally agree with him that there is no lack of dialogue. That is required. I think the LG's administration must ensure that administration enters into dialogue with all regions and people of all communities. But there is a lot of development push in Jammu and Kashmir. We must see the positive aspect. Today you have IIMs coming up, IITs coming up, AIMS coming up. There were 3 medical colleges, 7 more have been added. 10 medical colleges in a small union territory like J&K. There are 2 central universities which are already almost in the on completion stage. There were already 3, I think five universities, 3 more coming up. Now all this has changed the paradigm here, and is a new industrial policy. Huge investment is coming even from countries like Dubai and UAE, and that is going to change the face of Jammu and Kashmir. Look across POK, hardly anything. You don't have an international airport in POK, you don't have medical college, AIMS, IITs, not what to talk of. To compare and look at the condition Pakistan today, people are dying of hunger. Correct. And J&K under Prime Minister Mr. Modi and Amit Shah ji, the development push is going to change the face. It will take some time for these projects to complete. Right, it'll take some time, but the message is loud and clear. Both LG, Manoj Sinha ji, and of course, Home Minister Amit Shah, and of course, Prime Minister Narendra Modi are people who listen. Now, this is Jammu speaking. आरंभ है प्रचंड, यानी पहली बार जम्मू आए हैं, अच्छी बात हुई है, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, बट ये वादा है कि यहाँ बार बार आना होगा, एंड वील कंटिन्यू टू स्पीक टू द पीपल ऑफ जम्मू मोर रेगुलरली इन दिस डिस्कोर्स व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस रीजन दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक दैट ट्रिप टू लद्दाख, वो भी ड्यू है. बट फॉर द मोमेंट आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वेरी वेरी स्पेशल सेशन. थैंक यू टू एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस. Good evening, this is Brass Tax. I'm Zaka Jacob. The centre has finally banned the Popular Front of India, the PFI, a radical Islamist organisation whose members are wanted for cases ranging from murder to radicalisation to terror camps. Now, this ban has come after dozens of places were raided and more than 300 PFI leaders and workers were arrested over the last week to 10 days. Some incriminating material has also been recovered from some of them. The PFI claims that this is nothing but a witch hunt. The question though is, why should anyone, let alone mainstream political parties, why should there be even an iota of tolerance for radicalized views and actions that lead to terrorist behavior? After 2 rounds of intensive raids and more than 300 arrests, it finally happened.
The centre banned the Popular Front of India and its associates for 5 years under the Unlawful Activities Prevention Act. Listing the reasons behind the ban, the Home Ministry's notification stated that PFI is involved in several criminal and terror cases and shows sheer disrespect towards the constitutional authority. With funds and ideological support from outside, it has become a major threat to the internal security of the country. And investigations in various cases have revealed that the PFI and its cadre have repeatedly engaged in violent and subversive acts. निश्चित रूप से लंबे समय से जांच चल रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जो उनकी गतिविधियों को संदिग्ध बनाता है। With PFI being declared an unlawful organisation, their properties could be attached and activities of their members could be deemed illegal. Where right now in the Benson town, where happens to be the PFI state head office here, are leaders across the state and from also outside the state. So they used to come and visit this organization. A team of police officials have managed to reach over here. They are inspecting this entire site, just making sure that no untoward incident happens over here. And that is the reason why a team of police officials have just arrived. The ban was welcomed by most state governments. This is a very, very welcoming move. PFI and CFI create a fertile ground. Al-Qaeda Indian subcontinent can recruit it. जो minorities है उसमें घुसकर वहाँ पर अनरेस्ट निर्माण करना, वहाँ पर इंडोक्ट्रिनेशन करना, फंडिंग की भी अपनी व्यवस्था के छोटे छोटे अकाउंट निकालकर उसके माध्यम से किसी के ध्यान में ना आए इस प्रकार से ये टेरर फंडिंग कर रहे थे। But politics wasn't far behind, with many opposition leaders questioning the move. Every Muslim youth will now be arrested with a PFI pamphlet under India's black law UAPA. How come PFI is banned but organized associated with convicts of Khaja Ajmeri bomb blast are not? Why has government not banned right-wing majoritarian organization? Bans really have not worked in the past. The same people can work with a different name in a different organization. Earlier RSS was banned thrice. I just stopped them. For several years now, PFI has been one of the biggest threats to India. Their members chopped the hand of a college professor in Kerala. They've been behind cold-blooded murders of right-wing members and obtained explosives to target prominent people and places. So why object to a crackdown on such a radical organization? All right, let me now bring in our guests on this significant decision. Many are saying a decision that should have been taken weeks and months ago, but it's come nonetheless today. A ban on the PFI declared as an unlawful organization for the next 5 years. Ghanshyam Tiwari is spokesperson of the Samajwadi Party, will be joined by Nagaraju Yadav of the Karnataka Congress. Feroz Ahmed Buck is former Chancellor of the Maulana Azad National Urdu University. Sushant Sareen, Senior Fellow at the Observer Research Foundation. Gopal B. Huzur, former IPS officer of the Karnataka Police. And Tausif Ahmed Khan, advocate and political analyst. Ghanshyam Tiwari, let me start with some of the facts. So far in the last week to 10 days, more than 300 PFI workers and leaders have been arrested. Incriminating material, including propaganda material, wireless sets, hoards of cash were recovered from some of these members. There were raids that happened in over 100 places across the last week, 10 days. In the state of Karnataka alone, the PFI is wanted for more than 300 cases, ranging from arson to rioting to murder. In the state of Kerala, from where this radical organization belongs or started its journey from,